are gases, then higher ones are liquids, and still higher ones, more than roughly 12 to 13 carbon atoms, are solid. Okay, so this is the first physical property. Now, second property is solubility. Okay, what we can say is melting and boiling point. Now, what is the factor on which the boiling point and melting point depends? Bonding, obviously. If the bonding is strong, then what happens to the melting point or boiling point? Increase. Increase. So what do you think of the boiling point? Suppose I have to arrange methane, ethane, propane in the increasing order of boiling point. Which will be having the highest boiling point? Ma'am, propane. Propane. Now reason again lies in the van der Waals forces. As I have told you that between two molecules there are van der Waals forces, and these forces increase with increase in size. Okay. It goes on increasing. If I am taking this hexane, it will have still higher boiling point. The reason again is increase in van der Waals forces. With increase in size or surface area. Okay. Now the next property is, suppose I have to take the boiling point of isomers. Okay. Next property is boiling point of isomers. Isomers means, suppose I am taking this pentane. Suppose I am taking example is pentane. What are the various isomers possible for pentane? Yes, Vanshika. Ma'am, isopentane, neopentane. Okay, N-pentane. सबसे पहले तो N-pentane बोला करो. N-pentane means all of them are in a straight chain. This is my N-pentane. Iso means, what is the meaning of iso, Bhavya? What is the meaning of iso? Ma'am, alkyl group is attached at second carbon. Yeah, this is isopentane. Okay. Now, if I am taking is neopentane, what is the meaning of neo? Ma'am, two methyl group at second position. Two methyl group at second carbon atom. अच्छा, मैं एक चीज और सोच रही थी. पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 अब खत्म कर लेंगे, जो भी चैप्टर्स बचे हैं हाइड्रोकार्बन्स के बाद. देन वी विल बी स्टार्टिंग विद इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनामिक्स. ठीक है, क्योंकि बाकी चैप्टर छोटे छोटे हैं. अदरवाइज आई विल इन्फॉर्म यू कुछ चेंज होगा तो. ठीक है, सो दिस इज N-pentane, isopentane and neopentane. Now can you tell me which is having the higher surface area? If you remember your 9th and 10th concept that a sphere has a lower surface area. पढ़ा था ये कहीं आपने? फिजिक्स में भी शायद पढ़ा होगा कि स्फेरिकल ड्रॉप्स जो होती है, they have the drops are spherical because of the lesser surface area. Now can you tell me which is having the lesser surface area? Which is looking like a sphere? Neopentane. आप देख लो, it is spherical in shape. So it means that neopentane will have least surface area. Will have least surface area. Why? Because of spherical in shape, structure, almost spherical. So if I am taking the boiling point of isomers, now with branching, what do you think will happen to the boiling point? Branching सबसे ज़्यादा maximum किसमें है? Neopentane में. So with branching, surface area decreases. Why it is decreasing? It is becoming spherical in shape. It is becoming more and more spherical in shape.
So it means that with branching surface area decreases. So what happens to the boiling point? Out of these three, can you arrange them in the increasing order of boiling point? What is the increasing order of boiling point of isomers? सबसे कम किसका है? ये सरोमिता N-pentane. N-pentane का सबसे कम है. Okay. Arumita, can you try? One thing I have told you that with branching surface area is decreasing. Ma'am, first is N-pentane, then isopentane, then neopentane. सबसे ज्यादा किसका है? मैम सबसे ज्यादा N-pentane का है. सबसे ज्यादा N-pentane का है. तो अगर मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो व्हाट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर? Ma'am, neo iso then Ma'am, neopentane isomer. ठीक है, so increasing order of boiling point is neopentane का सबसे कम है. It has the least boiling point out of all these. Then it is isopentane. And then it is N-pentane. N-pentane has the highest boiling point among the isomers. The reason is that with the branching surface area decreases, so van der Waals forces also decreases. यहाँ पे लिख लो ये van der Waals forces decrease. मैम उसके टाइप ऑफ रिएक्शन, मैम टाइप ऑफ चेन देख के हम पता लगा सकते हैं कि इसका आउटर स्ट्रक्चर कैसे होगा. हाँ, टाइप ऑफ चेन देख के हम बता सकते हैं ना. हमें दिख रहा है जितनी ज्यादा ब्रांचिंग हो रही है उतना वो स्फेरिकल हो रहा है. सो मोर इज द बॉइलिंग, मोर इज द ब्रांचिंग, लेस विल बी द सरफेस एरिया. ठीक है, सो विद ब्रांचिंग सरफेस एरिया डिक्रीजेस एंड बॉइलिंग. वैन डर वाल्स फोर्सेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? जस्ट टोल्ड यू दे डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ सरफेस एरिया. सो इफ द ब्रांचिंग इज मोर, सरफेस एरिया इज लेस, सो वैन डर वाल्स फोर्सेस आर लेस, so boiling point will be less. Is it okay? So next now solubility in water. What is the main factor on which solubility in water depend? Acha, are these polar? Dielectric constant. Dielectric constant, or in chemistry terms we can say, since we are bothered with bonding, if a compound is polar in nature, or if it can form hydrogen bonds with water. Okay, so then it will be soluble. Now, do you think what is the condition for hydrogen bonding? What is the condition for hydrogen bonding? Yesterday only I Hydrogen attached to the highly electronegative atom like fluorine, oxygen, nitrogen. एक तो होता है H+, hydrogen having a positive charge along with the electronegative atom oxygen, fluorine and neon. Nitrogen, sorry. Now, if I am taking this methane, is it polar in nature or non-polar? यहाँ पे चार्ज सेपरेशन है क्या? Non-polar. It is non-polar. So if it is non-polar, can it form hydrogen bonding with water? Water के ऑक्सीजन के साथ can it form hydrogen bonding? बोलो. No, because यहाँ पे H+ तो है ही नहीं. So being non-polar, they cannot form hydrogen bonding with water. Being non-polar, they cannot form hydrogen bonding with water, hence they are insoluble. Is the point clear? Okay, so with this, what we have done are the physical properties. Okay, 1 minute. Is there any portion I can't remember exactly? I think that nothing is deleted or some portion is deleted. Ma'am, please show the board properly. हाँ, 1 minute बेटा, वो मैं कर देती हूँ board पे point out. I was just checking if some portion is deleted. Can anyone check? I have given you already a list of deleted syllabus, or should I check? Kyari, you just note it down, then I will check on my phone if some portion is deleted or not, okay? First note it down.
I was thinking, मेरे को याद आ रहा है कि जब free radical mechanism deleted था. Let me check. Yes, ma'am, deleted. Yes, ma'am. About combustion protolysis भी deleted है. Combustion है. Combustion and pyrolysis भी. Okay, combustion में तो कुछ है ही नहीं, चलो okay. Okay, now we are going to do are the chemical properties. Chemical properties of alkanes. Alkenes की physical properties दोबारा ले लोगे एक बार, revise हो जाएगा. Actually में same है, but I will take it again. Chemical properties of alkanes. Now the first chemical property is substitution reaction. Now the main thing regarding substitution reactions in this case is that they take place with the help of what is the meaning of substitution reaction? One atom is replaced by another. This is the meaning of substitution, and generally what we say is that less reactive atom, the one which is less reactive, will be replaced by a more reactive. This you have done in the case of displacement reactions, yes or no? What is substitution? Is nothing but a displacement reaction. One atom is displacing another. You have done in the reactivity series, a more reactive element displaces a less reactive, yes or no? क्या था आपने ये reaction? Copper sulfate. Yes. Zinc is more reactive, so it will substitute copper or it will replace copper. So this is a type of displacement or substitution reaction. Substitution means one atom is replaced by another. So generally a less reactive element is replaced by a more reactive element. An example of substitution reaction in the case of alkanes is halogenation. Halogenation here means that hydrogen of alkane is replaced by halogen. Okay, hydrogen of alkane is replaced by halogen. So this is the meaning of halogenation. And another thing is that it proceeds via a free radical mechanism. Mechanism nahi karna. It proceeds via a free radical mechanism. What is the meaning of a free radical? We have done in the previous chapter. What is the meaning of a free radical? Ma'am, single electron. Single electron. जैसे मैंने आपको ये बताया था, अगर क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, if it is homolytic fission. Homolytic means bond means two electrons. So what is the meaning of homolytic fission? It means this chlorine will get its own electron and another chlorine will get its own electron. So this is the meaning of a free radical. So it simply remember that halogenation proceeds via a free radical mechanism. Okay. Another thing is that a 3-degree free radical is more stable. Why? Because of the hyperconjugation. This we have again done in the previous chapter. So what is the stability of free radicals? 3 degrees more stable as compared to 2 degree and 1 degree. So 3-degree free radical is highly stable. Okay. So if I am now taking an example of a substitution reaction, suppose I am taking CH4 and I am reacting it with chlorine in the presence of sunlight. तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जब भी होता है, ये कब होता है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. टू मेक अ फ्री रेडिकल सनलाइट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो मेन मैं आपको मैकेनिज्म में मेन स्टेप बता रही हूँ, नॉट इन द डिटेल. ठीक है, तो व्हेन वी आर टेकिंग CH4 plus Cl2 in the presence of sunlight, so one of the hydrogen will be replaced by chlorine. HCl will be lost, yes or no? Now, if we are taking more chlorine, then what happens?
H mu is the symbol of sunlight. What will happen if I am taking more chlorine? Yes, Rishabh, Kanak, can you tell me? Arumita? पहले में मैंने बताया one of the hydrogen is replaced by chlorine. Now there are 3 more hydrogen. More hydrogen will be replaced. Rishabh, what will be the product formed? अगर मैंने एक और हाइड्रोजन हटा दिया, जैसे पहले मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो वी आर गेटिंग 3 हाइड्रोजन और उसकी जगह आ गया क्लोरीन. नाउ इफ आई एम रिप्लेसिंग वन मोर हाइड्रोजन, व्हाट विल हैपन? CH2, Cl2. Yes, very good. CH2, Cl2. What is the IUPAC name of this compound? What is CH2, Cl2? What is the name? Chloromethane. एक ही क्लोरीन है. Dichloro. Dichloro. Numbering कर सकते हो 1 1. Otherwise, it's not required because methane has only 1 carbon atom, so it is dichloromethane. Now, what will be the next product? Arumita, अब आप बताओगे. Arumita, unmute yourself. I hope you are there. Ma'am, Yes. I hadn't taken the first class, so कोई बात नहीं, इसका फर्स्ट क्लास से कोई लेना देना ही नहीं है. मैम सेकंड प्रोसेस का नाम क्या है? क्या चीज? मैम सेकंड पॉइंट जो आपने फ्री रेडिकल वाले मेंशन किया उस प्रोसेस का नाम क्या है? नहीं, मैंने ये बताया कि व्हाई, व्हाट इज द रीजन दैट 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन. अरुमिता ट्राई कर बेटा. या एक मैं और बता रही हूँ, उसके बाद अरुमिता नेक्स्ट आपने ही बताना है. मैंने कहा कि एक हाइड्रोजन हट गया अरुमिता, तो कितने हाइड्रोजन बचे? अरुमिता अनम्यूट योरसेल्फ. एक हाइड्रोजन, yes. उसकी जगह एक क्लोरीन आ गया, तो कितने क्लोरीन हो गए? Ma'am, 3. 3. ठीक है. और बेटा ये ध्यान रखो कि वैसे तो आपको पहली क्लास मिस ही नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अगर आपने मिस कर दी, तो अगर मैं ये हफ्ता ये चैप्टर करा रही हूँ, तो आप ये कोई ना बोलोगे कि मैंने पहली क्लास मिस की थी. उसको कवर अप कर लो, ठीक है. Okay, ma'am. ट्राई क्लोरोमीथेन. नेक्स्ट बोलो अरुमिता, तुम्हें मैम? बोलो. हाँ बोलो. मैम आपने रिएक्शन में HCl के ऊपर H nu लिखा है, इसका क्या मीनिंग था? H mu is sunlight. H mu is the symbol of sunlight. Free radical generally takes place at a high temperature or in the presence of sunlight. So CHCl3 is called as trichloromethane. Is there a common name of CHCl3? Is there a common name which is used for anesthetic purpose? बेहोशी करने में देखते होगे कहीं पर भी, CIT में, टीवी सीरियल्स में. What is Chloroform. chloroform? Chloroform. Called as chloroform. ठीक है. Trichloromethane is also commonly called as chloroform, which is used as an anesthetic. Now, what will be the final product if I am adding one more chlorine? Ma'am, CCl2. 2 कैसे आया? हाइड्रोजन हटा, क्लोरीन और आ गया. Yeah. Ma'am, 4. Ma'am, 4. 4. It is called as. It is called, what is the name? Tetrachloromethane. Any common name? Any common name? Carbon tetrachloride. CCl4 is commonly called as carbon tetrachloride. 4 chlorine है ना? Which is used as a solvent. So IUPAC name of CCl4 is trichloromethane, but the common name is carbon tetrachloride. Now suppose I am taking is this one. जब थोड़ा सा हॉट टॉपिक आ गया,
and we are reacting it with chlorine. ये आपका point entrance exams के लिए, JEE mains के लिए बहुत important point है. Okay, now what will be the possibilities? अच्छी carbon atom क्या 1 degree, 2 degree, 3 degree? Can you identify? 1 degree. 3 degree. ये वाला क्या 1 degree? 1 degree means which is attached only to one carbon atom. What about this carbon atom? 2. 2 degree. 2 degree. This carbon atom? 1. 1. Okay. So when we are reacting it with chlorine, there are two possibilities. ये 1 degree भी replace हो सकता है. 1 degree can be replaced. So if 1 degree is replaced, then what will be the product formed? अगर 1 degree chlorine से replace हो गया एक hydrogen, then what will be the product formed? मैम लास्ट में CHCl2 हो जाएगा. CH2Cl आ गया, एक हाइड्रोजन हट के क्लोरीन आ गया, आगे आ गया CH2 CH3. यस, लेकिन अगर 2 डिग्री रिप्लेस हुआ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? If 2 degree is replaced, then what will be the product formed? CHCl2. ये पूरा बोलो. CH3, then CHCl2. CHCl, CH3. अच्छा, अगर ये रिप्लेस हुआ तो भी बनेगा ना, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है. अगर मैं क्लोरीन यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं, नंबरिंग तो यहीं से होगी, 1 ही मिलेगा. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. So in this case there are two possibilities. So it means a mixture of products is obtained. Yes or no? दोनों बनेंगे. A mixture of products is obtained, but which will be formed in major amount? कौन सा मेजर होगा? कौन सा मेजर होगा? हम 1 degree वाला. Ma'am, 2 degree. 2 degree. Because I have told you that it proceeds via free radical mechanism and the order of stability of free radicals is 3 degree, 2 degree, 1 degree. So it means 3 degree will be the major product. उसके बाद होगा 2 degree and then 3 degree. So if I have to write major and minor, then 2 degree will be the major product and this will be the minor product. Both of them will be obtained. But major अगर 1 degree और 2 degree है, then 2 degree will be the major of product. अगर कोई 3 degree है, then 3 degree will be the major product. Reason because it proceeds via free radical mechanism and in which 3 degree is more reactive. So just remember the point that 3 degree hydrogen atom is more reactive as compared to 2 degree and 1 degree. Is it okay? Ma'am, can you explain this reaction, ma'am? Please? ये देखो. Let me rub all this. Ma'am, please repeat the reason once. Why is it so that 3 degree molecule has more reactivity? A mixture of products is obtained, but 2 degree will be the major as 2 degree free radical is more stable than 1 degree. आपको ये बताया था कि जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स होते हैं, that is order of stability of free radicals is 3 degree, 2 degree, 1 degree. So 3 degree free radical जो होता है, it is more stable. ठीक है. और कोई भी चीज, कोई भी रिएक्शन कब होता है? If the product formed is more stable. Yes. Yes, ma'am. करते हैं to form a stable product. तो अगर किसी केस में जो प्रोडक्ट में पहले आपका फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है, तो कौन सा ज्यादा रिएक्ट करेगा? जिसमें फ्री रेडिकल या तो 3 डिग्री बने या 2 डिग्री. 1 डिग्री वाला फ्री रेडिकल कम बनता है. तो इस केस में आपको ये 1 डिग्री बनता है फ्री रेडिकल. इस केस में हमारा बनता है 2 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन एटम 1 डिग्री है, 2 डिग्री है. तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा जिसमें एक 2 डिग्री एक 1 डिग्री है? तो इन द मेजर प्रोडक्ट 2 डिग्री विल बी मोस्ट स्टेबल, या 2 डिग्री जल्दी रिएक्ट करेगा, so that the product formed is more stable. तो
तो ये जो 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम है, इट विल बी मोर इजीली रिप्लेस्ड बाय हैलोजन. मैम अगर 2 डिग्री स्टेबल है तो फिर वो ज्यादा थोड़ा रिएक्ट करेगा. जी नहीं, मैं ये कह रही हूँ प्रोडक्ट फॉर्म. ये देखो, जैसे अगर मेरा ये था, ठीक है, या तो मेरा 1 डिग्री फ्री रेडिकल बन गया. मैंने कहा फ्री रेडिकल बनता है, H हट गया, एक रेडिकल बन गया, ठीक है. ये मेरा, उसके बाद इसमें क्लोरीन ऐड होता है, फिर मेरा बनता है CH2Cl, CH2CH3. इस तरह से मैकेनिज्म हो रहा है, ठीक है. अगर ये कब था, अगर 1 डिग्री. लेकिन अगर 2 डिग्री रिएक्ट करता है, तो अगर मेरा 2 डिग्री रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट में आपको क्या बना, ये बना फ्री रेडिकल, फिर इसके साथ क्लोरीन अटैच हो गया, एंड व्हाट वी आर गेटिंग इज दिस वन. ठीक है, तो अब इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है? आई हैव टोल्ड यू दैट 2 डिग्री इज मोर स्टेबल. यस मैम. तो कोई भी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है, दैट शुड बी मोर स्टेबल. तो यानी ये Yes, वाला ma'am. है ना, सो दैट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज मोर स्टेबल. ओके मैम. ठीक है, तो ये आपका एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है. ये इसके आगे बहुत एप्लीकेशंस आती है तुम्हारे जेईई मेंस में, लेकिन ये उसका बेस है इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज कंबशन. कंबशन तो ऑल ऑफ यू नो, मैं वैसे 2 मिनट में करा देती हूँ, मैं पूरा नहीं छोड़वा रही. यस मैम वो लास्ट में मैम CH3 CHCl CH3 होना चाहिए मैम. इन ठीक है. Yes. Okay, what is the meaning of combustion? What is the meaning of combustion? Ma'am, commercial means large scale. Combustion means when anything burns in the presence of sufficient amount of oxygen to give carbon dioxide and water. This is the meaning of combustion. Yes, यस मैम. बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हो. यहाँ पर 2 आ गया, 2 O2. So combustion means if any hydrocarbon is burned, what will be the product? Carbon dioxide and water. अच्छा, इसी के साथ मैं एल्कीन्स की भी करा देती हूँ combustion. अगर मैंने इथीन लिया, what will be the product formed? What will be the product formed? Same CO2H2O. ठीक है, so whenever a hydrocarbon burns, what are the products of combustion? Carbon dioxide and water. Okay, combustion means if I am taking the complete combustion, when a hydrocarbon is heated in the presence of sufficient amount of oxygen, what we are getting is carbon dioxide and water. So this is the meaning of combustion. Now if okay, next is oxidation. बस combustion की introduction ही दिया है, main point. Next is oxidation. What is the meaning of oxidation? Addition of Loss of electrons. Okay, oxidation means loss of electrons, addition of oxygen, loss of hydrogen. So these are the various definitions of oxidation. Now controlled oxidation means we are controlling the amount of oxygen required. So इसमें आपका है main point, depending upon the catalyst used and amount of oxygen, various products can be obtained. So starting from a single compound, if we are changing the catalyst or we are differentiating the amount of oxygen, the same compound can give the different products. तो generally इसके ऊपर क्वेश्चन आता है क्योंकि इसमें आपका कैटलिस्ट वगैरह यूज होते हैं. Now if I am taking this first case, if I am taking this methane and I am reacting it with oxygen, okay, but I am changing the catalyst. Suppose the catalyst I am taking is copper, मैं साथ में heat कर देती हूँ. Don't remember the temperature and pressure. The product formed will be alcohol.
What is the name of this alcohol? Methanol. Methanol. Let me balance it. Okay. Now, if I am taking again methane plus oxygen, but I am changing the catalyst. Catalyst is MO2O3. MO is the symbol of molybdenum. So what I am changing is the catalyst used. In this case, the product used obtained will be HCHO. What is the CHO group? What is the name of this? Aldehyde. Right. One carbon atom means methane. Methane से बन गया methanol. ठीक है. First one is methanol alcohol. Second one is aldehyde. So if I am changing the catalyst, we can see that we can get the different product. Now, if I am taking, suppose this compound that is ethane, तो ये questions आ सकती हैं आपको complete करना है, and I am reacting with oxygen in the presence of manganese acetate. Acetate होता है CH3CO whole twice manganese acetate. Don't remember temperature and pressure. What we are getting is carboxylic acid having 2 carbon atoms. Okay. It means that starting from a hydrocarbon, I can get a alcohol, I can get a aldehyde, I can get a carboxylic acid. Only thing what we are changing is the catalyst. Okay? Ma'am, in first reaction, catalyst is heat and copper. No? Catalyst is copper. Heat को हम catalyst नहीं बोलते. Catalyst is copper. Heat हमें करना पड़ता है. Room temperature पे बहुत कम reactions होते हैं. ठीक है? तो catalyst is copper in the first, second is molybdenum oxide, third is manganese acetate. Okay. Now one more example is there. If I am taking this compound, what is the name? 2-methyl propane. Actually, what is this carbon atom? 1 degree, 2 degree, or 3 degree? This carbon atom. 3D. 3 degree. 3 degree. So since it is having a 3 degree hydrogen atom, so if a compound has a 3 degree hydrogen atom, then if we are reacting it with, if we are doing the oxidation with alkaline KMnO4, KMnO4 means potassium permanganate. It is a very good oxidizing agent. So if we are taking this compound which is having a 3 degree hydrogen atom, then on reaction with potassium permanganate, what we are getting is an alcohol. And this compound is tertiary, commonly called as tertiary alcohol because this is a 3 degree carbon atom. Okay, this is a tertiary alcohol, or IUPAC name is 1,2,3, 2-methyl propane 2-ol. ठीक है, तो ये आपके टिपिकल एग्जांपल्स हैं जो आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे. इसमें इसको थोड़ा सा रटना पड़ेगा आपको. ऑक्सीडेशन इज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक. हाँ,
मैम इसकी कॉमन नेमिंग में हम टर्शरी बुटाइल अल्कोहल नहीं लिखेंगे कि कितने कार्बन एटम्स है कॉमन नेमिंग में? बताते हैं कि इट इज अ टर्शियरी अल्कोहल फॉर कार्बन एटम्स मीन टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल या टर्शियरी ब्यूटेनॉल. ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल. मैम Okay. लास्ट रिएक्शन में रिएजेंट क्या है? यहाँ पर यस मैम. alkaline KMnO4. Alkaline means in the presence of a alkali. Alkali means as in potassium hydroxide, sodium hydroxide. All these are alkali. Alkali means bases. KMnO4 potassium permanganate. So I have told you now 3 reactions. One of them is substitution. Second is combustion in very short. Third is oxidation. Now the next reaction is isomerism. All of you know meaning of isomers. So if I am taking a compound, it converts into its isomers. Suppose I am taking is N-hexane. Easy, इसमें कुछ भी नहीं है. This is N-hexane. Now to convert it into its isomers, what we are heating it with anhydrous AlCl3. Anhydrous means in the absence of water. So if we are heating it with anhydrous AlCl3 plus HCl, it converts into its isomers. Can you tell me isomers? Can you tell me various isomers? अगर एक ही 5 Isohexane. Hydrogen, neohexane. और भी isomers possible है. एक तो ये हो गया second carbon atom. एक मैम हो 2 गया मिथाइल पेंटेन. this is 2 methyl pentane. 3 methyl भी हो सकता है. यस मैम. और भी isomers possible है. 2,2 dimethyl butane. प्लस अदर आइसोमर्स. ठीक है, 4 इसके आइसोमर्स मैंने करवाए थे. 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन और 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन. ओके, तो आइसोमेरिज्म सिंपली मींस कन्वर्जन इनटू आइसोमर्स. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बट यू हैव टू डू दिस पॉइंट. नेक्स्ट रिएक्शन इज एरोमेटाइजेशन. व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स? आपको बताया था मैंने कल भी. when you were asking बेंजीन रिंग कंपाउंड्स. benzene ring compounds. So aromatization. Aromatization means conversion of a aliphatic. Aliphatic means which do not have a benzene ring. Conversion of a aliphatic into aromatic compounds. अच्छा, बेंजीन रिंग के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए थे? For benzene ring. If I want to convert a compound into benzene, benzene is C6H6. Ma'am, could you repeat, ma'am, the above sentence, ma'am? Aromatization means conversion of a aliphatic into aromatic compound. Aliphatic means alkane, kenes, and yes. ठीक है, conversion of a aliphatic. What I was asking, suppose I want to form benzene. How many carbon atoms minimum are required? 6. 6. So what should be the alkane I should be taking? What alkane should I be taking? Alkyne. How many Hexane. carbon atoms? Hexane. Minimum there should be 6 carbon atoms. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So minimum there should be 6 carbon atoms. So if I am taking is hexane, it will be converted into benzene.
and the catalyst used is either vanadium pentoxide, V2O5, means vanadium pentoxide. It can be chromium trioxide, or it can be molybdenum oxide. So if we are heating it, heat साथ में सभी में चाहिए. If we are heating it with these catalysts, what we are getting is benzene. Mechanism नहीं करना, तो simply remember, if conversion of a aliphatic into aromatic compound, इस process का एक और नाम भी है reforming. This process also called as reforming. Okay, if I want to prepare is toluene. What is toluene? What is toluene? Yes, chapter पुराना वाला chapter which came in the exam. 1-methyl benzene. Yes, toluene means methyl benzene. How many carbon atoms will be required? 7. 7. मैं हेप्टेन लूंगी. What is heptane? C7H16 है ना? CnH2n+2. या मैं ऐसे लिख भी सकती हूँ. So if I am taking this heptane and I am reacting it with vanadium, any of these three, and what I am getting is toluene. Clear? Last reaction is reaction with steam. Okay, बेटा 2 मिनट में कैमरा ऑफ कर रही हूँ. जस्ट वेट. या मैं एक काम करती हूँ. एक्चुअली ऊपर ना वो अलमीरा है, स्टडी वाली बुक चाहिए कोई एक. जस्ट वेट. ओके. Meanwhile, any doubt you can ask. मैम आइसोमेरिज्म में सिर्फ एक ही आइसोमर मिलेगा या नंबर ऑफ आइसोमर्स मिल सकते हैं? See, we can mixture of isomers are obtained. What we are getting are a mixture of isomers. What we are getting are a mixture of isomers. ठीक है? Ma'am, then we can't separate them. No, they are difficult to hard to separate. हाँ, they are hard to separate. Okay. ठीक है? Last one is reaction with steam. इसके बाद पहले कुछ क्वेश्चन आंसर्स करा देती हूँ, तब आगे प्रोसीड करेंगे ताकि तुम्हारा recap हो जाए. What is steam? Steam means basically water at a high temperature. So if I am taking is methane, ये आपका पहले भी रिएक्शन था मेरे ख्याल से 8th में तो नहीं था, 9th 10th में 10th में होगा. If I am taking is methane plus water, I am heating it in the presence of a catalyst. What we are getting is carbon monoxide plus hydrogen. Can you tell me what is the name given to this? ये उसमें भी था आपका चैप्टर हाइड्रोजन में था. What is this called as CO plus H2? कुछ याद है? वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस. Yes or no? Syngas. Syngas. It's very good. Okay. So with this, we have done the physical, chemical properties as well as preparation of alkanes. अभी इसके isomers हैं, एक टॉपिक और है वो बाद में ले रही थोड़ी देर में. Let's do few questions. आज क्लास में रफली 10 o'clock तक लूंगी. एक्चुअली मेरे को दिसंबर में ना 3-4 छुट्टियां भी लेनी है, 2-3 छुट्टियां, तो मैं थोड़ा इसलिए कवर अप कर रही हूँ. ओके.
इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस हैं ही नहीं। इसके ऊपर बेटा एनसीईआरटी की बैक में ज्यादा है ही नहीं, क्योंकि एक्चुअली में या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, रिएक्शंस में सिंपली डायरेक्ट ही आएगा जो भी आएगा, ठीक है। क्वेश्चंस अभी इस पे नहीं करा रही, एल्कीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। आईयूपैक नेम में साथ साथ ले लूंगी। ओके, next topic that we are going to do are the conformations of alkanes. This is again a very very important topic. मैम एरोमेटाइजेशन में जो हमने लिखा है वेलेडियम, क्रिप्टम, ये सब वो है कैटलिस्ट Yes, कोई भी कैटलिस्ट ले सकते हैं। और हीट के साथ यूज होगी। हाँ, generally most of the reactions require heat. मैम ये CO और H2 का क्या बता रहे थे आप? This is called as syngas. यहाँ पर चैप्टर हाइड्रोजन में था. It is a method for the commercial preparation of hydrogen. If I want to prepare hydrogen on a large scale, what we are doing is this method. Next topic is conformers or conformations. Conformations. Conformations भी बोलते हैं, so conformers भी बोलते हैं. And the another word is rotamers. Rota means rotation. These are the spatial, SPATIAL लिखते हैं, but the word generally what we are calling is as spatial. These are the spatial arrangements of atoms which arises due to free rotation around carbon-carbon sigma bond. I will be explaining the meaning. Do you remember what is the meaning of sigma and pi bond? How a sigma bond is formed? And how a pi bond is formed? Head-on overlapping. Head-on overlapping. Sigma bond is formed like this. If this is one, this is another. और इसमें हम rotate कर सकते हैं. I am using the pens, just see. If I have to take the formation of a sigma bond, what we say is that this is one orbital, this is another. So keeping one, we can rotate another. Yes or no? हम एक को rotate कर सकते हैं. So this is the meaning of a sigma bond. But in the case of a pi bond means sideways overlapping. ऊपर वाला ऊपर के साथ bond बना रहा है, नीचे वाला नीचे के साथ. So this is my pi bond. If I am taking these two orbitals, ठीक है? तो ऊपर वाला ऊपर के साथ बॉन्ड बनाएगा, कंबाइन हो जाएगा, और नीचे वाला नीचे के साथ. तो कैन बी रोटेट अ पाई बॉन्ड? अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूँ, कैन आई रोटेट? ये तो फिक्स्ड है. यस और नो? कैन आई रोटेट? Yes, ma'am. नहीं, मैं रोटेट नहीं कर सकती क्योंकि ऊपर और नीचे जॉइंट है. अगर मैं इसको रोटेट करूंगी तो आपका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. ये आपका बॉन्ड बना हुआ है इस पेन के साथ. एंड इफ आई वांट टू रोटेट, आई हैव टू ब्रेक अ बॉन्ड. That means free rotation around sigma bond is possible, but along a pi bond, free rotation is not possible. Is the point clear? So if I am, you no need to draw this, this is just for explaining. If I am taking a sigma bond, in the case of a sigma bond, free rotation is possible. But if I am taking a pi bond is like this. So if I want to rotate it, I have to break a bond. So free rotation not possible. Is the point clear? So in the case of a sigma bond, free rotation is possible, but in the case of a pi bond, free rotation is not possible. Okay, so these Ma'am, free rotation is not possible, but ma'am, is rotation possible?
ऑन हीटिंग, मतलब रोटेशन पॉसिबल तो है, लेकिन अगर बॉन्ड ब्रेक हो गया देन बॉन्ड हैज टू बी ब्रोकन। ठीक है, तो जनरली हम कहते हैं रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। फ्री का मतलब होता है, एक्चुअली आई एम यूजिंग द वर्ड फ्री क्योंकि सिग्मा बॉन्ड्स के लिए कुछ हल्की सी कोई भी चीज को रोटेट करें यानी कुछ तो एनर्जी चाहिए ना, एंड दिस एनर्जी इज सप्लाइड एट रूम टेम्परेचर। So what we say, if I am taking a alkane at room temperature, this bond can move. Is the point clear? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Now see another topic very carefully. What is the geometry of a carbon atom? Tetrahedral? Yes or no? Yes, ma'am. Carbon Yes, ma'am. atom tetrahedral. अगर ये मेरा एक कार्बन एटम है which is tetrahedral, if I am taking a carbon atom which is tetrahedral, ठीक है, ये मेरा बॉन्ड हो गया कार्बन कार्बन बॉन्ड। Yes or no? This is roughly the tetrahedral arrangement. दो आगे एक पीछे इस तरह से होता है tetrahedral, something like this. Yes or no? Yes, ma'am. पॉइंट को आराम से देखना, ये मेरे 3 हाइड्रोजन है, लाइट ब्लू पेन, दीज आर 3 हाइड्रोजन, दिस इज कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब यहाँ पर एक और हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी है, ठीक है, क्या मैं इसको रोटेट कर सकती हूँ? जैसे यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर, आई कांट होल्ड दीज मच पेन्स एक्चुअली, चलो मैं 2 पेन पकड़ लेती हूँ। इफ आई एम टेकिंग इट लाइक दिस, बट इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट टू होल्ड दिस वेट। Okay, if I am taking it like this, I hope it's quite visible to all of you. Yes or no? एक बस पेन पकड़ा Yes, ma'am. We know that we can rotate this carbon carbon bond. तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन बिल्कुल सेम साइड पर है, लेकिन अगर मैं इसको रोटेट कर रही हूँ इसमें, तो क्या ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो गए या कुछ टिल्ट हो गया? No, ma'am. No, ma'am. यहाँ पर सेम थे, एक के पीछे एक था, मैं इसको ऐसे भी होल्ड करूँ तो यू कैन सी ओनली 1 पेन, दिख रहा है ये पेन? अब केवल फ्रंट वाला देखोगे या ऐसे देखो आप, अगर मैं इसको रोटेट कर सकती हूँ, यस आई कैन कीप वन एज फिक्स्ड एंड अदर आई कैन रोटेट because of the free rotation around carbon carbon bond. So these are the special type of isomers which are shown only by alkanes because of the free rotation around carbon carbon sigma bonds, and these are called as conformational isomers. Now there are 2 methods of showing this. Okay, there are 2 methods of showing this. One of them is the Sawhorse projection formula. The first method of writing this, there are 2 ways to show this. One of them is the Sawhorse projection formula. Now the example I am taking is ethane. Now Sawhorse means I am taking this as a carbon carbon bond. I am using different pens. I am taking these as a carbon carbon bond. Now this carbon has attached to the 3 hydrogen atoms. Yes or no? ऐसे होते हैं, आपको मैंने ऐसे स्ट्रक्चर दिखाया था, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, these are the 3 hydrogen atoms. Suppose I am saying as HA, HB and HC. There are 3 hydrogen atoms. If you are taking it like this, as I told you, this is a carbon carbon bond, and here there are 3 hydrogen atoms. This is carbon carbon bond and there are 3 hydrogen atoms. Okay, so this is a way of representing it. ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है। अब इसका देखो दूसरे का, अगर इसके एग्जैक्टली यहाँ पर ये है, आर यू सीइंग इट? Yes, ma'am. टिल्ट कर रही हो, अगर मैं टिल्ट कर रही हूँ, क्या तुम्हें दोनों ऊपर वाले पेन दिख रहे हैं? एक ही अच्छे से दिख रहा है? ये मेरे 3 हाइड्रोजन एटम्स है, दिस इज कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब इस हाइड्रोजन के बिल्कुल आगे मैंने एक और हाइड्रोजन रख दिया, तो आपको ये वाला ब्लू पेन अच्छे से दिख रहा है, नहीं दिख रहा? No. इसको कवर नहीं करने दिख के रहा? लिए। No, ma'am. कवर कर रहा है ना, हम कह रहे हैं इसको इक्लिप्स कर रहा है। इक्लिप्स का क्या मतलब होता है? एक दूसरे को छुपा रहा है, तो इट इज इक्लिप्सिंग दिस।